जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता पूर्व भाग अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। वायुरुवाच अथ सर्वे प्रदीप्तांगा वैकुंठं प्रययुद्रुतं प्रणम्याहुश्च तत्सर्वं हरये देवसत्तमा। श्रुत्वा तेषां तदा वाक्यं भगवान् पुरुषोत्तमः किमिदन्त्वीति संचिन्त्य ज्ञात्वा तत्कारणं च स जगाम मन्दरं तूर्णं महेश्वरदिदृक्षया। दृष्ट्वा देवं प्रणम्यैव प्रोवाच सुकृताञ्जलि। विष्णुवाच भगवन् ब्राह्मण कश्चिन्दु उपमन्युरिति श्रुत क्षीरार्थमदहत्सर्वं तपसा तन्निवारय। वायुवाच इति श्रुत्वा वचो विष्णु प्राह देवो महेश्वर शिशुनिवारयिष्यामि तत्त्वं गच्छ स्वमाश्रमं। तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं स विष्णुर्देववल्लभ जगामाश्चास्य तान् सर्वान् स्वलोकममरादिकान्। एतस्मिन्नन्तरे देव पिनाकी परमेश्वर शक्रस्य रूपमास्थाय गन्तुं चक्रे मतिं तत। अथ जगामं मुनेस्तु तपोवनं गजवरेण सितेन सदाशिव सह सुरासुरसिद्धं गैरमर राजतनुं स्वयमास्थित। सवारण्यस्वारु तदा विभुं तं निवीच्य बालव्यजनेन दिव्यं दधार शच्या सहितं सुरेन्द्रं करेण वामेन सितातपत्रं। रराज भगवान् सोमः शक्ररूपी सदाशिव तेनातपत्रेण यथा चन्द्रबिम्बेन मन्दर। आस्थायेवं हि शक्रस्य स्वरूपं परमेश्वर जगामानुग्रहं कर्तुम् उपमन्योस्तदाश्रमं। तं दृष्ट्वा परमेशानं शक्ररूपधरं शिवं प्रणम्य शिरसा प्राह महामुनिवर स्वयम्। उपमन्युवाच पावितश्वाश्रमः सोऽह्यं मम देवेश्वर स्वयं प्राप्तो त्वं जगन्नाथ भगवन् देवसत्तम। वायुवाच एवमुक्ता स्थितं प्रेक्ष्य कृताञ्जलिपुटं द्विजं प्राह गम्भीरया वाचा शक्ररूपधरो हर। शक्र उवाच तुष्टोऽस्मि ते वरं ब्रूहि तपसानेन सुव्रत ददामि चेप्सितान् सर्वान् द्युम्याग्रज महामुने। वायुवाच एवमुक्तस्तदा तेन शक्रेण मुनिपुङ्गव वरयामि शिवे भक्तिं मित्युवाच कृताञ्जलि। तन्निशम्य हरिप्राह मान जानासि लेखपम्। त्रैलोक्याधिपतिं शक्रं सर्वदेवे नमस्कृतं मध्वत्तो भव विप्रर्षे मामेवार्चय सर्वदा। ददामि सर्वं भद्रं ते त्यज रुद्रं च निर्गुणं। रुद्रेण निर्गुणेनापि किं ते कार्य भविष्यति। देवपङ्क्तिबहिर्भूतो यः पिशाचत्वमागत। वायुवाच तच्छ्रुत्वा प्राह स मुनिर्जप पञ्चाक्षरं मनुं मन्यमानो धर्मविघ्नं प्राहतं कर्तुमागतम्। उपमन्यु उवाच त्वयैवं कथितं सर्वं भवनिन्दारतेन वै प्रसङ्गादेव देवस्य निर्गुणत्वं महात्मनः। त्वं न जानासि वै रुद्रं सर्वदेवेश्वरेश्वरं ब्रह्मविष्णुमहेशानं जनकं प्रकृते परं
सदसदव्यक्तमव्यक्तं यमाहु ब्रह्मवादिन नित्यमेकमनेकं च वरं तस्मादवृणोऽप्यहम् हेतुवादविनिर्मुक्तं साङ्ख्ययोगार्थदं परम् उपासते यं तत्त्वज्ञा वरं तस्मादवृणोऽप्यहम् नास्ति शम्भो परं तत्त्वं सर्वकारणकारणात् ब्रह्मविश्वादिदेवानां स्रष्टुर्गुणपरात् विभो बहुनात्र किमुक्तेन मया ध्यानुमित्तमहत् भवान्तरे कृतं पापं श्रुता निन्दा भवस्य चेत् श्रुत्वा निन्दां भवस्याथ तत्क्षणादेव सन्त्यजेत् स्वदेहं तन्निहत्याशु शिवलोकं स गच्छति आस्तां तावन्ममेच्छेयं क्षीरं प्रति सुराधम निहत्य त्वां शिवास्त्रेण त्यजाम्येतं कलेवरं वायुवाच एवमुक्त्वोपमन्युक्तं मर्तुव्यवस्थितः स्वयं क्षीरे वाच्यामपि त्यक्त्वा निहन्तु शक्रमुद्यत भस्मादाय तदा घोरं मधुरास्त्राभिमन्त्रितं विसृज्य शक्रमुद्दिश्य ननाद स मुनिस्तथा स्मृत्वा शम्भुपदद्वन्द्वं स्वदेहं दग्धुमुद्यत आग्नेयीं धरणां विप्रु उपमन्युरवस्थित एवं व्यवसिते विप्रे भगवान् भगनेत्रः वारयामास सौम्येन धारणां तस्य योगिन तद्विसृष्टमघोरास्त्रं नन्दीश्वर नियोगत जगृहे मध्यतः क्षिप्तं नन्दीशङ्करवल्लभ स्वं रूपमेव भगवानास्थाय परमेश्वर दर्शयामास विप्राय बालेन्दुकृतशेखरं क्षीरार्णवसहस्रं च पीयूषार्णवमेव वा दद्यादेरर्णवाश्चैव धृतोदार्णवमेव च फलार्णवं च बालस्य भक्ष्यभोज्यार्णवं तथा अपूपानां गिरिं चैव दर्शयामास स प्रभु एवं स ददृशे देवो देव्या साध्वं वृषोपरि गणेश्वरैस्त्रिशूलाद्यैर्दिव्यास्त्रैरपि संवृत दिवि दन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टिपपात च विष्णुब्रह्मेन्द्रप्रमुखैर्दे देवैश्छन्ना दिशो दश अथोपमन्युरानन्दंस मुद्रोर्भिर्मीरावृत पपात दण्डवद्मुमो भक्तिम्रेण चेतसा एतस्मिन् समये तत्र सस्मितो भगवान् भव एह्येहिति तमाहुः मध्यर्नान्द्राय ददौ वरान् शिव उवाच भक्ष्यभोज्यान्यथा कामं बान्धवैर्भुङ्क्ष्व सर्वदा सुखी भव सदा दुःखान् मुक्तो भक्तिमान् मम उपमन्यो महाभाग तया वैशाहि पार्वती मया पुत्रीकृतो यद्य दत्तक्षीरोदकार्णव मधुनश्वार्णवश्चैव दध्यन्नार्णव एव च आज्योदनार्णवश्चैव फलादर्णव एव च अपूपगिरिरश्चैव भक्ष्यभोज्यार्णवस्तथा एते दत्ता मया ते हि त्वं गुहीष्व महामुने पिता तव महादेवो माता वै जगदम्बिका अमरत्वं मया दत्तं
गानपत्यं च शाश्वतं वरान् वरय सुप्रीत्या मनोभिलषितान् परान् प्रसन्नोऽहं प्रदास्यामि नात्र कार्या विचारणा। वायुरुवाच एवमुक्त्वा महादेव कराभ्यामुपगुह्य तत् मूर्धन्यधिया सुत्स्ते अमिति देव्यन्यवेदवत् देवी च गुहवत्प्रीत्या मूर्धिन तस्य कराम्बुजं विन्यस्य प्रददौ तस्मै कुमारपदमव्ययं क्षीराब्धिरपि साकार क्षीरं स्वादुकरे तदत् उपास्थाय ददौ पिण्डिं भूतं क्षीरमनश्वरं योगेश्वर्यं सदा तुष्टिं ब्रह्मविद्यामनश्वरां समृद्धिं परमां तस्मै ददौ सन्तुष्टमानस अथ शम्भुप्रसन्नात्मा दृष्ट्वा तस्य तपोमः पुनर्ददौ वरं दिव्यं मुनये ह्युपमन्यवे व्रतं पाशुपतं ज्ञानं व्रतयोगश्च तत्त्वतः ददौ तस्मै प्रवकृत्वा पाटवं सुचिरं परं सोऽपि लब्ध्वा वीरान् दिव्यान् कुमारत्वं च सर्वदा तस्मात् शिवाच्च तस्याश्च शिवायामुदितोऽभवत् ततः प्रसन्नचेतस्क सुप्रणम्य कृताञ्जलि ययाचे स वरं विप्रो देवदेवान् महेश्वरात् उपमन्यु उवाच प्रसीद देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर स्वभक्तिं देहि परमां दिव्यामव्यमिचारिणीम् श्रद्धां देहि महादेव स्वसम्बन्धिषु मे सदा स्वदास्यं परमं स्नेहं सान्निध्यं चैव सर्वदा एवमुक्त्वा प्रसन्नात्मा हर्षदत्रदया गिरा स तुष्टाव महादेव उपमन्युर्द्विजोत्तम देवदेव महादेव शरणागतवत्सल प्रसीद करुणासिन्धो साम्ब शङ्कर सर्वदा वायुरुवाच एवमुक्तो महादेव सर्वेषां च वरप्रद प्रत्युवाच प्रसन्नात्मम् उपमन्युमुनिसत्तमं शिव उवाच वत्सोपमन्युतुष्टोऽस्मि सर्वं दत्तं मया हिते दृढभक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितोऽभ्यसि अजरश्वामरश्चैव भवत्वं दुःखवर्जित यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वित अक्षया बान्धवाश्चैव कुलं गोत्रं च ते सदा भविष्यति द्विजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्च शाश्वती सान्निध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजोत्तम उपकण्ठ मम त्वं वै सानन्दं विहरिष्यसि एवमुक्त्वा स भगवान् सूर्यकोटिसमप्रभ ईशान स वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हर उपमन्युप्रसन्नात्मा प्राप्य तस्माद्वराद्वरान् जगाम जननीस्थानं सुखं प्रापादिकं च स इति श्रीशिवमहापुराणे वैयासिक्यां चतुर्विंशतिसाहस्रयां संहितायां तदङ्गर्तयां सप्तम्या वायवीव्यसंहितायां पूर्वभागे उपमन्युचरितवर्णनं नाम पञ्चत्रिंशोऽध्यायः समाप्त्यं सप्तम्या वायवीयसंहिताया पूर्वभाग। जय गुरुजी।